अभी बनाएंगे 20 ग्राम जोड़ी का बैंगल। पूरा शुरू से एंड तक देखिए, फुल वर्किंग। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कैसे बना रहा हूँ। पहले कमरी को पार कर लेना है मिडल पे। स्क्वायर हो गया तो पत्ती में डालेंगे, बाद में डालेंगे। एक जोड़ी एंगल पे 16 इंच कट कर लेना है। अब इसको डाइस में डालेंगे। डाई डाल के बैंगल को पूरा राउंड डाई बनाएंगे। देखिए कैसे बनाते हो, सिंगल सिंगल करके बनाना है। क्योंकि एक साथ बनाएंगे तो अच्छा नहीं होता। देखिए एक तो हो गया। फिर और एक डाल दो बैंगल पे डाइस डाल दिया। तो बैंगल डालना हो गया। अब इसका नीचे का बिजिल बनाएंगे। नीचे का बिजिल बनाएंगे उसका साइज के हिसाब से। इसका साइज 2 इंच 4 आना, तो अब उसको 7 इंच 3 आना हम भी कट करेंगे फ्रंट। और एक भी कट करके रखेंगे साइज के लिए। हम इसको पेंट कर लेंगे, पेंट करके तो चलो
बिजल को सोलर कर लिया। अब इसको धोखा में पूरा राउंड कर लेना है। बैंगल को भी सोल्डर कर लिया, जॉइंट कर लिया। अभी इसको भी राउंड करेंगे, राउंड करके नीचे बीजिल लगा के सोल्डर करेंगे। बिजल को डाल लिया। अभी इसको सोल्डर करेंगे, बैंगल के साथ बिजल को सोल्डर करेंगे। अब इसका बिजल पे सोल्डर हो गया। अभी इसका ऊपर का काम सोल्डर करेंगे सभी। अभी सभी बॉटम सोल्डर पर बाद में और बहुत कुछ काम बाकी है।
ये स्प्रिंग का बटन, 3 स्प्रिंग को एक साथ जोड़ लेंगे। पहले जोड़ के उसके बाद में बैंगल के ऊपर सोल्डर करेंगे। सोल्डर हो गया। अभी इसके ऊपर का काम सोल्डर करेंगे और स्प्रिंग को भी सोल्डर करेंगे। एक एक करके मार्किस डाई सोल्डर करना है। पहले वो सोल्डर कर लेता हूँ। अब तो पूरा सोल्डर हो गया। अब इसको क्लीन करना है। अब एसिड में डाल के क्लीन करेंगे। उसके बाद में दिखाएंगे कैसे हुआ, कैसे लग रहा है। क्लीन तो हो गया। क्लीनिंग हो गया। आप देखिए क्लीन हो गया। अभी अच्छा पानी में धो के आप लोग को दिखाएंगे कैसा लग रहा है पास से। देखिए 20 ग्राम का चूड़ी, एक चूड़ी का 20 ग्राम बैंगल्स। कैसा लग रहा है कमेंट कीजिए। Thank you for watch my video। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत
धन्यवाद। थैंक यू।